In the morning, we discussed the expectations of this ABP 2.0 and what we propose to do going forward after the training need assessment. And our leadership kind of showed you the way and set the tone going forward of the program. As our Center Head Dr. Keshav Rao was earlier kind of telling you that in the 2 days, we are going to engage in deep deliberations about what is required in the blocks to achieve saturation. Now, before we move on to the discussions with you and listen to some of the ministries who will be joining us today, we would like to request some of the theme experts to join us here in a panel discussion and discuss the 2 years of ABP experience, sector indicator performance, and some of the insights on how to achieve the saturation on these indicators. So for that, I would first like to request our consultants from NITI Aayog, Dr. Rajan Rawat in health, to please join us in the dais. Please give a big hand welcoming Dr. Rawat to the dais. I would like to request Dr. Krishna Sonalne, agriculture, to please join us at the dais. Dr. Krishna is on the way. He will join us in some time. I request N. Karthik Reddy on ABP achievements to join us at the dais, please. Please give a big hand. Finally, I request Sri Dadhi Chindrodia to talk about saturation in ABP to join us at the dais, please. Please give a big hand. From NIRD-PR, I would like to request Dr. Surjit Vikraman to please join us at the dais to talk about agriculture. I request Dr. R. Ramesh to join us at the dais to talk about basic infrastructure, water and sanitation. I also request Dr. Sucharita Pujari to please join us at the dais to talk about health. I request our student to please felicitate the dignitaries at dais. I request our student to felicitate. I also request Dr. Vijay Kumar to join us at the dais for education. I request our student to felicitate Dr. Rajan Rawat from NITI Aayog with a planter. A very warm good morning to all of you. And before I speak about the achievements that have been and the progress that have been made under Aspirational Block program, I want to thank all of you, all the officials, and especially our team here at NITI and the NIRD department here for making these arrangements for us to have a thorough discussion, an extensive discussion, so that we, as our Additional Secretary Sir mentioned, we as Team India achieve this goal of saturating the indicators in the upcoming Sampurnta Abhiyan 2.0, which is ready to be launched very soon. I think the achievements what we are talking about is whole solely because of you people, especially the block level officials and the frontline functionaries. I specifically would like to mention here, because when we talk about implementation, we talk about policies and all those structures, all those methods that have gone through a rigorous process, and then whole soul the implementation strategies gets drilled down at the field level. But actual implementation is being looked after by the block level officials and the frontline functionaries. It's the hardcore truth. We need to understand this. And in order to see that each and every indicators get saturated, we need to also mobilize the community. So the driven approach or the sustainable approach that we had adopted under the Aspirational Block program is a community driven approach, what we call as the Jan Bhagidari. So unless and until we don't include the people who are the core part or the structure of this implementation strategy or the program, we won't be able to reach to our objective, and we won't be able to achieve our goal that we are trying to achieve. So when we talk about Viksit Bharat 2047, we also need to see that Viksit Bharat is not possible without Viksit states. And for that vision which we want to foresee, we need to look upon what are all those gaps, challenges that needs to be addressed at the ground level. So whole solely, if I see the achievements made under ABP, we have seen that a community driven approach has laid the functioning, has laid down the efforts made by district officials, block officials, and the frontline functionaries. And because of these people only, we have been able to achieve these the saturation of all these indicators. Particularly if I talk about like arranging screening camps for hypertension, diabetes, because NCD is, you all might be aware, is an emerging problem or issue or the challenge which our country is facing right now. And secondly, people are not literally very aware about what are the consequences of these diseases. So what we made possible through our efforts and through the efforts of
district block administration, we had laid down extensive campaigning across district, across block, across gram panchayats in order to see that the screening of those non-identified individual or the population goes in a very extensive way in a 90 days campaign, and this was done in a mission mode. We had partnership with our government departments, our agencies which are helping us at the district and block level. They literally carried out the amplifying support that was required for us. And talking in terms of like addressing malnutrition also, it is very important in today's digital world that our systems are so much such enabled that we are able to track and monitor the actual growth and the progress of a child that is availing nutrition services in the Anganwadi centers. What earlier used to be, we didn't had these digital machines, we didn't had digital devices at the Anganwadi centers to track the real time, to see that what is actually happening on the ground on a real time basis. So now the Anganwadi centers are being equipped with smartphones. Some of them have digital growth monitoring devices. Portion tracker is also leveraged on a very big platform. So in order to see that all these efforts are made on the ground and to see the actual impact of what we are doing, it is very important that our frontline functionaries, block level officials, district level officials are sensitized, they are made aware, their capacity is built, so that what all targets, what our goals or objectives we are trying to achieve gets fulfilled in a very systematic way, and also what we are trying to achieve through those activities have a real impact. So it is all because of sensitization, it is all because of awareness activities, it is all because of community mobilization we had been able to achieve the saturation across all these indicators which showcased our progress during Sampoonta Abhiyan. And for that, our additional secretary sir also mentioned that we felicitated all those districts and block and frontline functionaries for making this happen. So it's a collective effort, it's a team effort, it's a team effort because unless and until we as a team don't work for the actual cause, we won't be able to see the real impact on the ground. And for that, I think we need more and more hands to help us out in order to see and observe the actual implementation that is being done. And thirdly, I would like to mention, I would end my talk here by saying that the 3 C's that we talk about, the 3 C's are actual core, are at the actual core of this ABP and ADP program. This is not like we talk about convergence is happening, collaboration is happening, but we should, as a responsible officer or as a responsible expert working in any field or any sector, we need to see and we need to look upon and dive deep inside each and every aspect to see that the actual convergence, actual collaboration, actual competitiveness is being graded based on the actual progress that has been made by our district block level programs. So this only thing that we need to consider while we are moving towards saturating these indicators, we need to see that we are on the right track and timely corrections. I would request each officer who has joined us for today's meeting to see the actual progress that will be made for saturating these indicators. There would be many issues and challenges that you are aware, and you are also aware that these all solutions, proposed solutions are there. But these solutions, you should not keep it to yourself, or you should not see that why would I tell because district administration or the block administration is not helpful. Sometimes coordination is not there, or all other issues are also there. But you should be open to ideas, you should be open to thoughts, and that's what we have been able to achieve through our Sampoonta Abhiyan campaign. That extensive campaigning along with community mobilization has helped us in achieving saturation across indicators. So we should be focused on keeping our attention people's first.
and it has happened for the first time in this program that government कहा जाता है कि हिंदी में सरकार आपके द्वार. So actual thing that has happened in this 3-month program is actual the beneficiaries have been able to avail services that were prioritized by the government at their doorstep, because district administration, block administration, as well as frontline functionaries were all aligned, were all in conjunction with the objective and with the goal we are trying to achieve in order to achieve Viksit Bharat 2047. So I would urge through this platform to all of you, please come together, work together, and we as a team would be able to achieve saturation for not only the indicators, but would be also be able to transform lives of those citizens who have been untouched in our society. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Rajan. Please give a big hands to Dr. Rajan for his talk. Now I would like to, now before I call the next speaker, I think Dr. Krishna Solanke has joined us. I would like to request our student to please felicitate Dr. Krishna with a planter. And I would also like to invite him to the dais to talk about the 2 years of experience on agriculture and how to achieve saturation. Dr. Krishna, please. No problem. Thank you, organizer, for inviting me for the panel discussion on the saturation of the key indicators. Because first of all, I will discuss about why this aspirational block program has been started in India. Because you know, in 2018, the aspiration district program has been started, and this is the program started because there are 112 underdeveloped districts in India. Okay, so government wanted to if the district has been progress, then state will progress, and once the state is progress, then the country will progress. So that's why the government has launched this program in 2018 by our honorable Prime Minister, and after that, on the success of this ADP, this on 2023 in the Chief Secretariat Conference, this aspiration block program has been started. So what is the motive of this program? The motive of this program is there are a lot of government schemes are available in the 5 themes: in health and nutrition, education, agriculture, basic infrastructure. So these schemes has to be get saturated, so that every farmer, every entity of this in this program, they should get benefited. Okay, so that's why this program is this program has been started. So now our today's panel discussion is about only on the saturation, on the 5 themes. Okay, so I will discuss more about the agriculture, because I have been invited as a panelist for the agriculture. So in the agriculture, there are, in aspiration block program, there are 5 indicators for the in agriculture theme. So out of that 5, so one indicator is like the formation of FPOs, farmers producer organization. So these organizations play a very important role in the villages, in the block level, and the block officers are the central for this. If the block officers has encouraged them to not only just to the agriculture, traditional farming, if they use along with the agriculture farming, they should have allied activities like dairy, processing, because the value addition is important. Just by the farming, the income will not get increased. So that's why they should have to focus on the allied activities with the agriculture. So for that, there is a need of the organizations. So now government has started the farmer producer organization concept. So initially they have target of 1000 farmer producer organizations. So now that has been target has been completed. Now these FPOs are playing very important role, not for just natural farming, not just for the specific agriculture practices, but also for the allied activities. Some they are doing processing, producing their own products, and with this, after producing their products, our NITI has one brand, Akanksha. So by using that, they will get the branding for that whatever the products they have produced, so they can take the brand from our vocal for local, that is Akanksha branding, and by using that branding, they can encourage the farmer producer organizations, because if the farmer producer organizations get increased, because their involvement is very important for the nowadays, because agriculture is not just a farming, not just livelihood, it is like to increase their income also. Okay, so that's why your focus should have encourage the farmer producer organization. As a block level officer, you can do that, like take their meetings regularly, launch the campaign, so that the farmer or producer organization be involved more and more. So another indicator like
Second indicator is soil health card. Okay, so this soil health card has been generated nowadays, but how many are they get benefited? The problem is that in the reality, if they are getting the card, but they are not actually utilizing that. Okay, so again, the farmer government has given a target for the respective state to generate this much of card against the target, whatever target they have given for the respective block. So based on that, they have to generate the card. But now the challenge is that they are not able to saturate that indicators. So what is that challenge? The challenge is the whatever soil testing they are doing by physically. Okay, by chemical testing they are doing. They are giving the sample to that respective laboratories, and it takes a lot of time to get the results. So the thing is that if they use the AI technique, artificial intelligence, the latest technologies are there. So we have our frontier tech hub, we have our technologies. There are a lot of IITs, NITs, they are working on it to get the real-time soil testing so that the card can be generated. So like that, if you use this artificial intelligence AI technique, so that we can achieve the saturation in these respective indicators. Okay, again the bovine vaccination campaign. So there are now the Ministry of Animal Health, Department of Animal Husbandry, Ministry of Agriculture, they are launching a campaign to increase the vaccination as much as possible. So I think for this bovine vaccination, the data is collected for the aspirational block program from the ministries. Data is getting from the ministry, but it is actually feeding at the ground level by the respective officers. Okay, so you as a block level officer, you have to be sure that this data has been correctly filled or not, so that every animals get benefited. Because nowadays, if you are not giving the vaccination, there is a increase of the diseases, pandemics, epidemics can be started. So that's why we have to taken care of that as well. You can instruct your block level animal husbandry officers so that can be achieved. So it is not about just feeding the data, but the ultimate aim is to everyone should get benefited. Every farmer, every entity which is in the theme of agriculture, that should be get benefited. Okay, so this is just I wanted to focus that only for the saturation, and thank you for the inviting. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Krishna. Now I request Shri N. Karthik Reddy to please come to the dais, to the podium, and talk about ABP achievements for the past 2 years. Honorable DG, Dr. Narendra Sir, respected dignitaries, senior officials, and distinguished guests. Good morning. It's my privilege to present before you the journey and achievements of the Aspirational Block Program over the last 2 years from 2023 to 2025. So I just don't want to take much of your time, because already my colleagues Dr. Rajan and Dr. Krishna has make you go through all the basic things about ABP. So I just wanted to briefly talk about ABP. As you all know, that building upon the success of ADP, the ABP was launched in 2023 with a vision to transform 500 blocks across 329 districts, 27 states, and 4 union territories, ensuring that the most backward regions are given focused attention. I am glad to say that over the past 2 years, we have witnessed measurable improvements across multiple dimensions, be it health, nutrition, agriculture, infrastructure, education, and social development. These outcomes reflect not only the policy interventions, but also the resilience and the participation of people at the grassroots. Today, I briefly highlight the key progress achieved, where we started in 2023 March, and I'm just taking 2 years as a reference point from 2023 March to March 2025. The story is one collective action, sustained effort, and visible impact on the lives of people. Here we go. So here comes the coverage of ABP and ABP monitoring, which I have already talked about. So if you briefly see on the left hand side, we have the March 2023. This is the baseline survey of India in March 2023. So when we come to the right hand side, we have March 2025. This is the overall composite score, as you are aware. So this is the progress. We have color coded in 5 different categories: red below 50, and 50 to 64% in orange, and 64 to 85% in yellow, and 85 to 95% in green. And if it is above 95%, we have color coded it as blue. So you can see the overall status. You can see a visible difference from 50 to 64%. The almost majority of 80 to 90% of India has transformed to 64 to 85%.
So you can see based on the composite scores. Now, if we map these team-wise indicators, like suppose if we take the team of health and nutrition, there are 11 indicators in total. So these are the ministries map and the status of indicators. We can see like how many indicators out of these 14 total indicators, which are more than 95% and which comes under 85 to 95%, 64 to 85%, and so on. So there are also negative indicators like low birth weight, SAM, MAM, which have been further color coded. You can see in the coming slides. So similarly, we have 11 total indicators for education, and these are the various percentages right now where they are. And also in agriculture, we have 5 total indicators. There are 3 indicators which have almost reached above 95%. So coming back, we have 4 total indicators in social development. There is one indicator between 85 to 95%, and similarly for infrastructure, we have 5 total indicators. We have one indicator between 85 to 95%. So similarly, if we go thematic wise, so this is the health and nutrition theme. So you can see major portion in the map, as we can see, it's in red. Right now, there is a visible change. We can see before 2023, it used to be below 50%. Right now, it's around 64 to 85%. So similarly for education, we can see the visible progress. Also, we can see the composite score regarding the theme of education. This is the average of 471 aspirational blocks, which is at 57.6%, and we can see better performing blocks. So which is at the minimum level and which is at the maximum level as per data we have from 2025 March. So similarly, we can see a lot of progress in agriculture and allied services. So we can visibly see there is a good progress in states like Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu and Kashmir. So similarly, this is the visual map for progress in basic infrastructure. So similarly, we can see there is also development regarding the composite scores of social development. So here we can see also progress of certain indicators which have performed well. As you can see, percentage of pregnant women taking supplementary nutrition under the ICDS program. Then we have measurement efficiency, which has jumped from 53.6% to 96.5%, and also percentage of operational Anganwadi centers with drinking water facilities, which have jumped from 31.3% to 89.9%. So similarly, we have the percentage of villages declared open defecation free from 34.2% to 94.9%. So these are certain other indicators which have shown visible difference. So herewith I conclude my presentation. So this concludes my presentation on the progress of aspirational block program over the past 2 years. The journey from March 2023 to March 2025 has shown us that real change is possible when policies translate into action at the grassroots levels. The credit to these outcomes not only goes to those leadership at the national and state and district level, but also at the block level. Those officers at the block level are the most hardworking officers which made this possible. Your dedication, whether in improving health and nutrition, strengthening schools, enhancing livelihood, or expanding infrastructure, has been central to the progress we are witnessing today. As we move forward, our focus will be on consolidating these gains, addressing persisting gaps, and ensuring that every aspirational block continues on the path of sustainable development. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, Mr. Karthik. I now request Shri Dadi Chindodia to come to the podium to talk about saturation. Namaste, Honorable DG Dr. G. Narendra Kumar sir. It's a privilege for us to present our work in front of esteemed and Honorable Dr. Narendra sir, as well as our real foot soldiers of aspirational blocks and aspirational districts program. Before I begin my
presentation formally, I'll just take 2 minutes to break the ice among us and just ask all of you. मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ें ताकि हमारे बीच की एक जो सुबह से दूरी बनी हुई है कि यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो थोड़ा आइस ब्रेकिंग हम करना चाहेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे क्या ये जान सकते कि आज हमारे पास रिप्रेजेंटेशन पूरे भारत भर से है, कहाँ कहाँ से है। तो जो लोग नॉर्थ इंडिया से है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या हमारे जो नॉर्थन इंडिया के हिस्से है वहाँ से, तो वो क्या वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी के लिए ज़ोरदार तालियाँ। जो यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से है, क्या कोई हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से प्रतिनिधि है यहाँ पे? उसके लिए उनके लिए थोड़ी और ज़ोरदार तालियाँ हम बजाना चाहेंगे। क्या हमारे पास यहाँ पे कोई दक्षिण भारत से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं? तो क्या आपने वो हाथ खड़े कर सकते हैं? आंध्र, साउथ इंडियन से, यस यस, उनके लिए भी बहुत ज़ोरदार तालियाँ। हमारे यहाँ पे कोई ईस्ट इंडिया से कोई है? ईस्टर्न इंडिया से उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल से यहाँ पे है, उनके लिए भी हम ज़ोरदार ताली बजाना चाहेंगे। और वेस्टर्न इंडिया, गुजरात जो मेरा होम स्टेट है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, सेंट्रल इंडिया से, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैडम, आप यहाँ पे पधारे। उसका हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग आपको अपने ऑफिस से दूर ला पाए और यहाँ तक हम तक पहुँचा पाए, ताकि हम आपसे आपकी हकीकतें, आपके अनुभव सुन सके। क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स काफ़ी सारे एंगेज होते हैं बहुत सारे कामों में। हम खुद यहाँ पे दिल्ली में काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल कामों में जुड़े हुए होते हैं, बट जो जनता जिसके लिए हम लोग सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उसकी साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स ही है। और इसीलिए नरेंद्र कुमार सर के गाइडेंस से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व द मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड, बिकॉज ऑफ NIRD's vision to train block officers and build the capacities of the soldiers that are in real need and that can actually bring the ground impact. So I would also like to give a round of applause to Narendra sir and NIRD's team, including Keshav sir, Ruchira ma'am and all other NIRD team. थोड़ा और मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। क्या पिछली बार हमने कैपेसिटी बिल्डिंग 1.0 किया था, तो उसमें से यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे सहभागी है जो यहाँ पे आज भी मौजूद है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग 1.0 2023 में जो हमने NIRD के साथ से किया था, उसमें कुछ थे हमारे पास ब्लॉक ऑफिसर्स? कोई है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें ये भी मैं बताना चाहूँगा कि NIRD के साथ की मदद से 2023 में भी हमने 5000 ब्लॉक ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की थी। वी डिड अ ब्लॉक ऑफिसर्स कैपेसिटी बिल्डिंग इन 2023 एज वेल, जिसके बारे में सुबह भी बात हुई, वेयर आवर एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर रोहित कुमार सर टॉक्ड अबाउट what were the perspectives during that capacity building training. Now we are going towards the second round of capacity building. I would come to how the first round helped us in achieving our objectives in the Sampurna Abhiyan. But before that, I like to ask one last question, that Sampurna Abhiyan 2024, there was an Abhiyan called Sampurna Abhiyan in 2024, July to September. May I know whom of all the participants here were present? उस संपूर्ण अभियान में कौन भाग लिए थे? मैं जान सकता हूँ, आके हाथ खड़े कर सकते हैं। इन सभी के लिए बहुत सारी जोरदार तालियों से मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा। तो आपको पता ही है कि यहाँ से हमने कितने डायरेक्शंस भेजे होंगे, आपको दिन रात उस 3 महीने हमने परेशान किया है, आपकी शायद नींद भी हमने थोड़ी डिस्टर्ब की होगी। बट और एक बार मैं आप सभी के लिए बहुत ज़ोरदार तालियों से आपका अभिनंदन, और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर द efforts and support that you provided during the last 3 months in 2024. So मैं इसी चर्चा के लिए, जैसे हमारे सहभागी कार्तिक जी ने अभी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में बताया, हमारे साथी और मित्र डॉक्टर कृष्णा, डॉक्टर राजन ने एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी। ये दोनों हमारे साथी इतने अनुभवी है एग्रीकल्चर में। डॉक्टर कृष्णा जी की PhD है, हमारे डॉक्टर राजन जी, जो हम आज पोषण ट्रैकर की बात करते हैं, तो पोषण ट्रैकर का जो नींव रखी गई थी, पोषण ट्रैकर 2.0 की जो आज नींव रखी गई है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य डॉक्टर राजन रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी
थैंकफुल है कि हमारे साथ ऐसे अनुभवी लोग हैं नीति आयोग में, जिनके साथ मिलकर हमें काफ़ी सीखने मिलता है, हम काफ़ी सारा अच्छा काम कर सकते हैं सर। और इसी के चलते हमने संपूर्ण अभियान 2.0 का जो काम किया था, उसमें मैं ये सारी चीज़ें तो हमारे कार्तिक जी ने बताई, पर जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी थी, वो जैसे सर ने कहा कि हम सेचुरेशन ऑफ प्रोग्राम इंडिकेटर्स करना चाहते हैं, फिर हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके लिए लीडरशिप ट्रेनिंग की थी हमने NID की मदद से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम लोग इंश्योर करते हैं। तो सर ने जो लोग ने संपूर्ण अभियान में भाग लिया था, दोज हु ऑल टू पार्टिसिपेशन इन द संपूर्ण अभियान, दे नो that community participation is central to the Sampurna Abhiyan and the Aspirational Block program, because even if the community members may not be an eligible beneficiary, but the supporting ecosystem is provided by the community. It may be the sarpanch, it may be the police patil, it may be an ordinary citizen who just sits at a tea stall but has a network that can help you to saturate and connect with the communities. And also I am audible properly, right? Yes, thank you. So in convergence and collaboration obviously with the central and the state government is one thing. But I would like to more talk about the Sampurna Abhiyan. These are the details. You may all be aware that there was an Abhiyan in the last 2024 last year from July to September, which was wherein we identified 6 key indicators in the themes of health and nutrition, education, agriculture and social development. These are the achievements, I'll come to it later, but the indicators that we were looking at were in the areas of ANC registration, and you may not like to note the details of the PPT, we'll all share the PPTs with you, that is totally fine, but जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों के बात करने के लिए, वो ये है कि संपूर्ण अभियान में हमने जो 6 इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए थे, we identified 6 indicators which included ANC registration, which included SHG, providing funds to SHGs, which included screening of diabetes and other non-communicable diseases like hypertension, and also distribution of soil health cards. These indicators were selected basis the input mechanisms, where हम क्या कुछ कर सकते हैं ताकि community तक कुछ input पहुंच सके. तो when we focused on this input, we realized that there is a lot that the block officers can do with the help of the state government and the district administration, that can identify each and every person who is eligible. So saturation या संपूर्णता, इसका जो philosophy है, वो philosophy ये है कि जैसा राजन जी कह रहे थे, सरकार आपके द्वार। जनरली आज़ादी के 50-60 साल तक यही पर्सपेक्टिव रहा कि हमें सरकार के पास जाना है, हमें कोई दफ्तर में जाना है, वी हैव टू गो टू एन ऑफिस, वी हैव टू फाइंड दैट ऑफिस फर्स्ट, देन वी हैव टू फाइंड द कंसर्न ऑफिसर फर्स्ट, और उसी में 6 महीने निकल जाते हैं। ठीक है, हमारी ज़रूरत आज है, आवर नीड इज टुडे, बट टू फाइंड एन ऑफिस, फाइंड द कंसर्न ऑफिसर and find the concerned guideline or the documents, it used to take 1 year, 2 years, 3 years. The perspective and the philosophy of saturation is to dismantle, to destroy this approach and reverse the approach wherein the beneficiary or the citizen that deserves or has the right of any service sits at their home, and the concerned government office, the concerned government officer with the concerned documents goes to the house of the citizen and asks them, do you need this service? Then even if the answer is no, then the officer sensitizes them that this is your right, ये आपका हक है, this right is what you deserve as per the Constitution of India, and basis that law and our policy of the government of India, of the state government, these are the benefits that you will get when you receive these services. These are the benefits that your child will get, that your girl child will get, that your parents, elderly parents will get once you receive this beneficiary. For example, screening of hypertension. Today India is as well as screening of diabetes. Today India is a diabetic capital of the world. सबसे ज़्यादा अगर डायबिटिक लोग हैं वो इंडिया में है,
वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा मीठा खाते हैं। डायबिटीज़ और मीठा खाने का इतना संबंध नहीं है जितना डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग से संबंध है। That screening of diabetes is more important to the cure of diabetes, because early screening provides you an early intervention to cure or to withhold diabetes up to an extent where it is manageable. So on and so forth. There are various examples which talk about that unless there is awareness of the rights, of the services and of the benefits of government schemes, there is a lot of possibility that a country cannot be developed. Once you give an awareness, once you provide a strategic mechanism of availing the benefits of a government service, only then a country can be developed, a citizen's quality of life and standard of living can increase. Basis this philosophy, our Honorable Prime Minister, as said by the honorable guest of the honorable host of today, Dr. Narendra Kumar sir, and our additional secretary sir, that the honorable PM inducted this philosophy not just in the aspirational blocks or district program, but across the country, across each and every scheme, irrespective of the political partisanship that exists. It is today that the government of India and the state governments are mutual understanding that Sampurnta and saturation is the only way that India and every citizen can be a developed citizen or a developed country. So in that regard, this Sampurnta's philosophy was planned. The achievements that are here are clearly visible. That it was said by our additional secretary. I would like to reiterate, because these numbers are just not data to celebrate, but these numbers are an applause to the block officers, that is you all, who gave your heart and soul to the program. We just issue directions, we just call you, we just send you letters, but the legs, the efforts, the mind and the soul is given by you all. So because of which 354 aspirational blocks out of 500 and 104 aspirational districts saturated 3 or more indicators. The 6 indicators, that were all the 6 indicators in the themes that were selected last year, there was saturation of all the 6 indicators by 91 aspirational blocks and 23 aspirational districts. So all the beneficiaries, like about 30, who had to be screened for diabetes and hypertension, were screened in these districts. All the pregnant women who were eligible for ANC registration were screened. So the pregnant women did not need to go to the A&M, the ASHA worker. The ASHA worker and A&M went. Why? Because your health, the block health officers, the CMHO made that mechanisms, made that facility available so that service delivery can go at the homes. As seen here, the public health system, 8.1 lakh children were immunized in just 3 months. And over 14 lakh women received supplementary nutrition. So I would again like to collab for all the CDPOs present here that 14 lakh women received supplementary nutrition in just 3 months. 30% of the world does not have such population of 14 lakh. So the 30% of world's countries do not have population of 1.5 million, but we made sure that 1.5 million women receive supplementary nutrition in just 3 months. That is only possible because of you all block officers. Then, as I told about the screening, 70 lakh, 7 million people received screening facilities across the country. Now, before that, which was almost 2 million, it increased to more than almost 3 to 4 times of screening. Now, this screening is not stopped there. Once the person is screened, out of 70 lakh people, I am definitely sure that 50 lakh people would now be taking curative measures to manage diabetes, to manage hypertension, right? Because hypertension at the later stage goes towards a lot of disabilities because of their mental capacities that are decreased, and they do not get exposures to various ecosystems because they are having that hypertension symptoms. Again, with respect to women's empowerment, 50,000 self-help group received
revolving funds, and this amounted, sir, to almost 8 crore rupees in just 3 months. So I would also like to clap for all the NRLM project managers who are present and who have given their hard work to provide these funds, because now we talk about Lakpati Didi. Before 10 years, if you said that a woman can be a Lakpati, everyone would laugh at you. कि क्या मजाक कर रहे हो, हमारी महिला आज 5,000 रुपये नहीं कमा रही, आप लखपति बनाने की बात कर रहे हो. कुछ साल पहले आज जो केबीसी आता है कौन बनेगा करोड़पति, एक लखपति का भी शो आता था. तो आज हम वो शो नहीं रहा है, वो ज़मीनी हकीकत हो गई है कि लखपति दीदियाँ बन रही है. वो लखपति दीदियाँ कैसे बन रही है, जब उनको सरकार से सहायता मिल रही है उनके घर तक. और आखिरी में जो हम कृष्णा जी ने बात की जो सॉइल हेल्थ कार्ड्स की, अगेन नाउ टुडे वी in that 3 months we had around 1.2 million people receiving soil health cards. It does not stop there. This is an input that we give, but the output is automatically generated from the people where they know that कितना यूरिया नहीं, हम लोग यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन कंटेंट में इफेक्ट हो रहा है, तो हमें यूरिया कितना डालना है, हमें पोटैश कितना डालना है. So all these input mechanism automatically result into outputs that at some point of time do not even require government interruptions. So these were the achievements, and because of these achievements, sir, we are very glad to tell you that across the country in the last in August end and September beginning, we had this Sampurnta Abhiyan Samman Samaro, and more than 8 to 10 chief ministers and honorable governors participated in it, and the district magistrates were given gold medals who saturated 6 indicators, and those who saturated 4 were given silver medal, and so on and so forth. However, we did not stop at just district collectors, sir. We organized district level Sampurnta Abhiyan Samman Samaro, and you would be very glad to know, sir, that around 300 districts organized this district Samman Samaro and felicitated this Anganwadi workers, Asha workers, the health workers, even at a level where we were told that even various clerks and peons were given certificates by the district collectors. And today, as our CEO sir says, that today hundreds and thousands of frontline workers have framed those certificates and kept in their drawing rooms and halls just to show that. So I would like to again clap for you, all of you, for the block officers, that because of you and your help and support, these frontline workers are also able to trust and serve to the nation. So this is about saturation. I don't need to go into the technicalities, but my only point is that Sarkar Aapke Dwar wala concept does not end at just going to the door. Once we bring a citizen up to a level that the citizen themselves go into that autopilot mode of recognizing and appreciating their rights and benefits that the government of India is and the state governments are giving, it goes into an autopilot mode where they don't need our intervention. So it is our duty कि एक टाइम के बाद हमारे उनसे जो लाभ मिल रहे हैं वो खुद ही लेते जाए और हमें उनके द्वार पे जाने की ज़रूरत ना पड़े. इस तरीके से हमें उनके द्वार जाना है कि अगले 1 या 2 साल के बाद हमें उनके द्वार पे जाने की ज़रूरत ना पड़े. तो उसी के चलते हमने संपूर्ण अभियान 2.0 पे अभी कंसेप्ट ये किया है. I'll end in the next 2 minutes is that we are designing it to select high impact indicators and push saturation of indicators. So now we are focusing on a lot of output based indicators where schools will have electricity facilities, or in that sense that school can go into the smart class, and then there is this increase in the foundational learning and numeracy where we talk about the Nipun mission and in education if we talk about. Then we also want to have that intensive awareness campaign and community mobilization. So all this today's training and training needs assessment is focused on कि कहाँ आपको challenges आ रहे हैं, कहाँ आपके community mobilization, what are the challenges that you are facing during implementing of this Sampurnta Abhiyan. So I saw a couple of people who have been there in the Sampurnta Abhiyan 1.0. So I would categorically request you, sir, to give your experience कि Sampurnta Abhiyan 1 में आपको क्या challenges face हुई, वो नीति आयोग से challenges हो या फिर वो एक कम्युनिटी सरपंच से चैलेंज हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से या डिस्ट्रिक्ट से,
आप हमें थोड़ा खुल के बताइए, हम उसको कैसे एड्रेस करना है उसके बारे में चर्चा विमर्श करके उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप उस चैलेंजेस के बारे में, आपके अनुभव के बारे में बताइए, ताकि हम लोग, जैसा सर कह रहे थे, हम नवंबर से एक मिशन मोड में स्कीम्स कन्वर्जेंस और सभी को इन्वॉल्व करके एक सेचुरेशन ऑफ इंडिकेटर्स अचीव करना चाहते हैं। और ये सेचुरेशन के जो आपके हम लोग ने इस बार ये भी प्लान किया है दैट वी विल प्रोवाइड सम इंसेंटिव्स based on saturation. So it is not just the delta ranking that we are focusing on, but we are also focusing on various innovative methods, and currently we have also invited a lot of innovative projects from the district administration. So we are focusing on a lot of incentives to be provided, and my asks are, as I said, is on how we can deliver the Sampurna Abhiyan 2.0 better than the Sampurna Abhiyan 1.0, and also address all the challenges that the block officers face while implementation of these crucial flagship programs in health, education, nutrition, agriculture, basic infrastructure, social development, financial inclusion. And there are various methods that you may be knowing of how we address this saturation, but the point is that we can discuss on the technical aspects, but on the aspects of collaboration is what we need to know, कि किस जगहों पे हम आपसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी जानकारी अगर आप हमें देंगे तो हम उसको, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस कोलैबोरेशन की नीड्स को एड्रेस कर सकें। इसी के लिए आई अगेन थैंक NIRD एंड ऑनरेबल डॉक्टर नरेंद्र सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई ऑल्सो विश ऑल ऑफ यू द बेस्ट for the coming 2 days as well as the trainings that are going to happen in October. Thank you so much. Thank you so much, Dadij. We have almost reached the end of the stipulated time for the panel. So I will take our faculty to the next panel instead of this one. And we will take a few questions from the block officers, if any. अगर block से जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोगों को अगर पैनलिस्ट के लिए कोई सवाल है, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैनल जो है वो शुरू करेंगे। Anyone has any question, you may please raise your hand. या आपको कोई अगर अपनी तरफ से कोई पॉइंट रखना है, कुछ आप यहाँ से शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना हाथ रेज करें। I guess everyone is. I think we should ask the question. Yeah. What is the general approach for Yes, the sir. ABP to HRB approach? Dadij can take it from you. Can we have the hand mics started? Hand mic start करवाइए please. Can we get the hand mic started? It has started, yes. It has started. You can take the hand mic. Hello, hello. So for the initial touch, we have laid down some key activities under our division in order to see that ADP and ABP 2.0 goes the way the actual district and the block administration what they are trying to achieve, because the program is solely dedicated to the district and the block and focused also on that part. So we have successfully been able to conduct some consultations with development partners, because as you all are aware that without team, I had been mentioning it in my remarks also, without team effort this is not possible. And if we see that if only the government aspect is being talked about, it's not possible to implement such a big program at district and block level. So we need development partners, we need agencies, we need people who can help us implement more efficiently the program at the field level, and also
what aim and objectives are required to be achieved through these programs are clearly defined and set, so that we are able to see the real impact of these programs, both these programs. So consultations with development partners, consultations with planning secretaries, consultations with the respective our partnering ministries in ADP and ABP have been carried out, and recently we conducted our consultations with the Prabhari officers that have been assigned for each of our aspirational districts. And yesterday we concluded a consultation with the planning secretaries from different states and different states planning secretaries participated in that meeting. So the overall, if I talk about the overall idea is to, we are still trying to gather information, trying to gather input suggestions that are coming our way, and then based on that compilation, overall compilation, we would be targeting and approaching the next phase of ADP ABP 2.0. So there are 3-4 parameters what we are actually trying to look upon. Like first of all, the indicators that are already saturated, we need to drop it or not, because at times it is very easy to mention that एक अगर बच्चा क्लास में 60% मार्क लाता है और एक बच्चा है जो 80% मार्क्स लाता है, तो 60% लाने वाला बच्चा 70% आराम से जंप मार सकता है, लेकिन अगर दूसरा बच्चा जो 80% मार्क्स लेके आया है उसको 80 to 85% अचीव करने में उसको एफर्ट थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है. सो हम ये चीज़ें भी थोड़ा देख रहे हैं कि किस तरह से जो है इंडिकेटर्स को हम ऐसा रखें कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर जो हम सैचुरेशन की बात करते हैं वो रियल चीज़ के साथ उभर कर सामने आए, और जो अच्छी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या अच्छे ब्लॉक्स हैं ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि वो सैचुरेट हो जाते हैं तो वो उस दायरे में, उस क्राइटेरिया में आ नहीं पाते हैं, कभी कभी ऑलरेडी दे आर बेस्ट परफॉर्मिंग. तो हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना इनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हो कि प्रोग्राम में जो अच्छी परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, ब्लॉक हैं, उनको भी हम थोड़ा और बेहतर तरीके से थोड़ा सा हैंडल करें, क्योंकि कई बार क्वेरीज आती हैं कि सर ऑलरेडी हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है कई सारी चीज़ें ऐसी होती कि हमें लगता है कि हम कौन सा इंडिकेटर ऐसा और लाएं, तो उसके ऊपर वो सजेशन इनपुट्स हमसे मांगते हैं. तो दैट व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू सी through our consultations with the respective ministries, with the concerned officers, with the secretaries, with the DMs and DCs also. तो एक एस्पेक्ट ये है. दूसरा एस्पेक्ट है कि थीम के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है इस वक्त कि कौन सी ऐसी थीम है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे अभी डिजिटल लिटरेसी के ऊपर बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, तो वो उसको और कैसे बेहतर तरीके से हम लोग लेवरेज कर सकते हैं अंडर आवर प्रोग्राम. क्या और इंडिकेटर्स हम रख सकते हैं इसके लिए. कुछ और जैसे नई नई स्कीम्स आ रही हैं और नए नए इंटरवेंशंस इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्या हम कुछ इंडिकेटर्स को ड्रॉप करके नए इंडिकेटर्स इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ नई थीम्स ला सकते हैं. और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे चीज़ लगती है दोनों प्रोग्राम के एस्पेक्ट को कवर जो करती है, वो ये करती है कि हम स्टेक होल्डर एंगेजमेंट और मिनिस्ट्री के एंगेजमेंट को कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे और इसको अच्छा बना सकते हैं, ताकि हमें इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द स्कीम्स ही नहीं, बल्कि जो हम गुड गवर्नेंस की जो बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस, सो गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए हमारा जो मैकेनिज़्म है, एंगेजमेंट का जो मैकेनिज़्म है, उसको कैसे हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ब्रीफ डिस्कशन चल रहा है और आगे भी चलेगा. और आई एम होपफुल कि विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स वी वुड बी एबल टू chalk out and find out ways in order to see that ABP 2.0 paves way ahead for Viksit Bharat 2047. Thank you very much. Thank you so much.
Sir, we don't have time for question answer right now. We will take the questions after the session is over. Okay, so I see one hand raised from the table of nutrition. Maybe one question from ma'am and then another question from sir. Two questions. There are other hand mics. I request you to please circulate those mics in the participants. सभी को नमस्कार। मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। मैं ICDS से मैं चाहती हूँ कि सर मुझे भी कुछ रिवार्डेड मनी पिछली बार मिला हुआ है मेरे ब्लॉग को सर, लेकिन मैं चाहूँगी सर उसमें एक चीज़ ऐड किया जाए। जैसे हमारा सर 7 इंडिकेटर है, उसमें हमारा बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सर आपने जो प्रोवाइड हमें सामान अवेलेबल कराया, जैसे सर पिछली बार हमें फर्नीचर, टीवी, RO सारे कुछ अवेलेबल कराया गया सर, लेकिन कहीं ना कहीं सर हम प्रभावित होते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अगर सर जो पैसे हमारे रिवार्डेड मनी में दिया जा रहा है उससे हमें कहा जा रहा है कि आप रिनोवेशन कराइए, अगर सर उससे बिल्डिंग बनने की बात आती तो कहीं ना कहीं सर ICDS का जो सारा कुछ इंडिकेटर सर हम फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सर आगे जाता। तो मेरा सर एक रिक्वेस्ट या सर सुझाव जो भी रहा हो सर, जो भी रिवार्डेड मनी दिया जाए सर उसमें सर इंफ्रास्ट्रक्चर नई बिल्डिंग कैपेसिटी बनाने का सर ज़्यादा उसमें ऐड किया जाए सर। मैडम इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक रैंकिंग में हमारी रैंकिंग में आता है और जिसको अवार्ड मिलता है, हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए कि बिल्डिंग को रेनोवेट करना है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। तो कई सारी व्यवस्थाएं जो है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारे पास प्रपोजल्स आते हैं आंगनवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, वो चाहे किसी भी पैमाने पर हो, पैरामीटर पर हो, हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं और उनको अकॉर्डिंगली जो प्रपोजल्स आते हैं उनको हम अपने लेवल पर वेटिंग करके अप्रूव भी करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने विंडो 2 हमारी एक कैटेगरी है इनोवेशन की, जिसमें हमने हमारे CEO सर ने, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी सर ने एनकरेज किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, जिसमें कि करीबन 600 से ज़्यादा DMDC शामिल हुए थे। तो हम बता दें कि अप्रोक्स अभी हमारे पास बहुत ही अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आए हैं और हम जल्द ही उनके ऊपर काम करना शुरू भी कर रहे हैं। उसमें से आंगनवाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात करी, प्रपोजल्स जो आते हैं इम्प्रूव करने के लिए, उनको हम समय समय पर उनको अवार्ड मनी जो वो जीतते हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रपोजल्स आते हैं हम उनको एनकरेज भी करते हैं और उनको वो अवार्ड मनी में जो प्रपोजल हमें मिलते हैं हम उनको अप्रूव भी अपने एम्पावर्ड कमेटी में थ्रू मिनिस्ट्रीज रिकमेंडेशन भी उनको इंक्लूड करते हैं। तो ऐसा नहीं है अवार्ड मनी जीत रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, हम उनको अप्रूव भी करते हैं और बहुत अच्छा काम फील्ड पर भी हो रहा है इस ओर अगर मैं आपको बताऊँ तो। सर मेरा कहना है कि मेरा ही रिवार्डेड मनी जो अप्रूव हुआ है सर 40 लाख, बट सर मेरा कहना है कि नया बिल्डिंग बनने की तरफ दिया जाए, रिनोवेशन में नहीं दिया जाए सर, क्योंकि रिनोवेशन में कहीं ना कहीं हमारा स्टेट भी सपोर्ट करता है। तो सर अगर वो हमारे पास अगर लैंड अवेलेबल हो तो जो हमारी बिल्डिंगें हैं सर, विशेषकर वो ऐसे रिमोट एरिया, पॉकेट एरिया में जहाँ एक हमारा संस्था दिखता है सर, जैसे संस्था दिखे नहीं, जो हमारे स्कूल में चलता है, कहीं ना कहीं स्कूल से प्रभावित होता है, पंचायती राज का सपोर्ट, सामुदायिक भवन है या मतलब बहुत सारे ऐसे सर बिल्डिंग है जिसका अनयूज सर, जैसे सामुदायिक भवन है सर, अगर किसी का शादी ब्याह भी लगता है अगर बिहार जैसे क्षेत्रों में तो सर वो उसको यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा आंगनबाड़ी उधर प्रभावित होता है। बट जब हमारी अपनी बिल्डिंग रहेगी सर तो कहीं ना कहीं मेरा वो दिखता है, सारे लोग जाते कहाँ है आंगनबाड़ी, छोटे बच्चे भी बता देते हैं कि ये हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है। तो मेरा सर कहना है कि रिनोवेशन पर सर कहीं ना कहीं हम लोग भी पंचायती राज से सपोर्ट ले लेते हैं, लेकिन नया बिल्डिंग बनाने में सारे लोग सर या तो लागत ज़्यादा आता है या कुछ भी उसके कारण वो पीछे अपना पैर हटा लेते हैं। तो मेरा सर बस यही कहना है कि जो रिनोवेशन वाला पैसा अप्रूव होता है उससे कहीं ना कहीं सर नया बिल्डिंग बनाने के लिए दिया जाए। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है ये, जो हमने सर फील किया फील्ड में जाकर
क्योंकि जब अपना एक संस्था दिखता है तो सारे लोग उसको, आसपास के सारे लोग जाते हैं, इवन प्रेग्नेंट वुमेन भी पहुंचती हैं। जैसे सर इम्यूनाइजेशन हुआ, फील्ड डिपार्टमेंट MOIC सर भी, MO सर भी लोग होंगे, वो आंगनबाड़ी केंद्र को एक वहाँ पर इम्यूनाइजेशन स्थल मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कभी अगर अपना आंगनबाड़ी केंद्र नहीं रहा, किराया का जैसे हम लोग रेंट पर भी बहुत सारा प्रोवाइड होता है, तो अगर उनके घर कभी शादी ब्याह, अगर कोई भी चीज़ें उनके घर भी, एक तो मिलता नहीं है रेंट पर बिल्डिंग, जो भी पैसा अवेलेबल कराया जाता है उस पर शौचालय, बच्चों के प्लेग्राउंड, इवन किचन भी होना चाहिए, सारा कुछ सर अवेलेबल नहीं हो पाता है। और अगर वो वहाँ के फैमिली अगर यूज करती है तो थोड़े समय के लिए हमारा सेंटर प्रभावित होता है, और जब अपनी बिल्डिंग रहती है तो सर हम लोग भी अच्छे तरीके से उसको सारे कुछ देते हैं, सारा कुछ दिखता है सर। उसमें क्या है कि वन ऑफ द की थिंग्स इज दैट ये नरेगा का कार्यक्रम जैसे मैडम बता रहे हैं कि एक ठोस परमानेंट बिल्डिंग आंगनबाड़ी के लिए वो तो खास जरूरत है हर जगह में, बिकॉज छोटे छोटे जगहों में आंगनबाड़ी काम करते हैं, रेंटेड बिल्डिंग में कई जगह काम करते हैं, ठोस आंगनबाड़ी बनाने की तो आवश्यकता है। तो उसके लिए कमी हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉस्ट नहीं आता है। तो जैसे ये कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो उसका तो फ्रीडम देना चाहिए आंगनबाड़ी बनाने के लिए, जो रिवार्ड में तो देना ही चाहिए, बट उससे ज़्यादा बृहद कार्यक्रम हमको टेकअप करना चाहिए। बृहद कार्यक्रम ये है कि किस तरह से आंगनबाड़ी सेंटर्स को हम परमानेंट बिल्डिंग्स में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, प्रॉपर स्पेशल बिल्डिंग में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, उसका भी स्रोत है कन्वर्जेंस मैकेनिज्म के माध्यम से नरेगा कार्यक्रम एक चलाया जाता है। नरेगा कार्यक्रम में कई अनप्रोडक्टिव काम टेकअप किया जाता है। अनप्रोडक्टिव मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी काम नहीं है, बट इट डज नॉट रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स नहीं जनरेट ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के वर्क्स टेकअप करते हैं, क्लीनिंग यू नो एट्सेट्रा, vegetation cleaning and so on, they get taken up. Instead of that, productive assets creation के लिए नरेगा कार्यक्रम के फंड्स को यूटिलाइज करके एसेट्स अगर क्रिएट किया जाए, जैसे इनका ये कहना ना आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र के लिए परमानेंट बिल्डिंग बनाया जाए ऑन ए सैचुरेशन बेसिस ऑल ओवर द कंट्री, जहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, नरेगा का फंड्स को यूज करके सारे जगह आंगनवाड़ी केंद्र के परमानेंट बिल्डिंग बनवाइए। सो दैट कैन बी वन सैचुरेशन इंडिकेटर। उसी तरह से सैचुरेशन इंडिकेटर हो सकता है नरेगा के फंड से कि जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग परमानेंट नहीं है, परमानेंट प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग बनवाइए। तो इसके तरह से 2-3 जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जो ना नरेगा कार्यक्रम के लिए हम लोग बना सकते हैं इंडिकेटर कि भाई आपको परमानेंट एसेट बनाने हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको आंगनबाड़ी केंद्र ही बनाना है। कई जगह आंगनबाड़ी केंद्र ऑलरेडी बने हुए हैं, तो या तो आंगनबाड़ी केंद्र बनाइए, या तो स्कूल बनाइए, या हेल्थ फैसिलिटी बनाइए। तो इस तरह से ना वी कैन हैव सम सच इंडिकेटर थ्रू दैट द प्रोडक्टिव एसेट्स आर जनरेटेड थ्रू द प्रोग्राम, एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, ब्लॉक्स में। तो दैट काइंड ऑफ इनिशिएटिव कैन बी थॉट ऑफ। अब इसमें बस मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं थोड़ा सा इसको जवाब दे देता हूँ। 2 मिनट का मैं थोड़ा समय लूँगा। ठीक है, नरेगा का के साथ WCD का कोलैबोरेशन है। बिल्डिंग के लिए हम 12 लाख रुपए के आसपास देते हैं, है ना। और बाकी जैसे आपका ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन, तो उसके लिए हम अपना जल शक्ति से कोलैबोरेशन करते हैं। बाकी मैं जो आपको चीज़ें बता रहा था कि रेनोवेशन भी आते हैं, नई बिल्डिंग बनाने के लिए भी हमारे पास प्रपोजल जो आते हैं हम उनको अप्रूव करते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब नई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका क्या होता है कि भाई स्टेट जब तक लैंड आइडेंटिफाई हमें करके नहीं देता, क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक प्रपोज़ल आंगनवाड़ी बनाने के लिए भेजा हमारे पास, तो हम जो है उस प्रपोज़ल को EC में रखने से पहले रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को भेजते हैं कि वो कितना फीजिबल रहेगा, है ना। तो उसके बेसिस पे जो है जो हमें जैसे कमेंट आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा। कई बार क्या होता है कि जैसे स्टेट ओन्ड आंगनवाड़ी सेंटर्स भी हैं कुछ जगह पे, है ना, तो उनकी एक जो कोडिंग होती है, एक आंगनवाड़ी सेंटर का एक कोड होता है। तो कई बार क्या होता है कि स्टेट ओन्ड आंगनवाड़ी सेंटर है, अगर वो चला रहे हैं अपने कोई इनकी स्टेट में अंदर कोई स्कीम है, नई उन्होंने आंगनवाड़ी बनाई है, हो सकता है उन्होंने कुछ असेसमेंट वगैरह किया हो जिसको लेके कि उनको लगा कि ये एक पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी कैटर नहीं हो पाई है, या इनको हो सकता है कि एक से ज़्यादा आंगनवाड़ी वहाँ पे बनानी पड़े डिपेंडिंग अपॉन द नीड। तो उसमें क्या होता है कई बार कि स्टेट में जब वो आंगनवाड़ी सेंटर का कोड जब वो जनरेट करते हैं तो कुछ साल के लिए तो वो चला लेते हैं अपना जो भी उनके पास पैसा है, फंड है। कई बार क्या होता है कि जब दे फील दैट आप ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, ऑपरेशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सर्विस डिलीवरी शायद से हैम्पर हो रही है,
तो वहाँ पे क्या होता है कि हमको पोषण ट्रैकर में वो आंगनवाड़ी का जो कोड स्टेट लेवल में जो उन्होंने जनरेट किया होता है ना, वो पोषण ट्रैकर में बोलते हैं कि वो आप जो है उसको मर्ज कर दीजिए। हाँ, बट प्रॉब्लम ये होता है कि पोषण ट्रैकर में देर इज़ अ स्पेसिफिक कोड दैट इज़ जनरेटेड फॉर एन आंगनवाड़ी सेंटर। 11 डिजिट का वो कोड होता है, यूनिक कोड होता है वो आंगनवाड़ी सेंटर का। तो इसीलिए हमने वो स्पेसिफिक यूनिक कोड रखा है ताकि हमें ये आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो कि जितनी भी सैंक्शंस मिनिस्ट्री से निकलती है, जो भी स्टेट को जाती है, स्टेट ओन्ड अगर कोई आंगनवाड़ी सेंटर है, तो हमें वो आइडेंटिफाई तो कम से कम हो कि भाई अगर वो आंगनवाड़ी सेंटर पे ये सर्विसेज जा रही है तो एक्चुअल वो पैसा वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो ये इशू हो जाता है कि स्टेट ओन्ड आंगनवाड़ी सेंटर अगर वो मैप नहीं है पोषण ट्रैकर में, तो हम उसको इतनी जल्दी जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो वो सारी जो प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना, मैपिंग करना, वो हमें फिर दोबारा करनी पड़ती है। ऐसे 2-3 स्टेट्स के साथ ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें कि स्टेट रन मशीनरी जो है वो कभी कभी हमें भी देखना पड़ता है कि किस तरह से फंक्शन कर रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, वी हैव फंड्स, और हम फंड यहाँ नीति से भी होते हैं। कई बार मिनिस्ट्री के साथ थोड़ा इशू ये होता है कि अब सारी चीज़ें, अब 14 लाख आंगनवाड़ीज़ हैं, वो सब की सब जो है अभी पोषण ट्रैकर में उनका डेटा कैप्चर हो रहा है। अगर स्टेट ओन्ड आंगनवाड़ी सेंटर, अगर स्टेट ओन्ड आंगनवाड़ीज़ अगर वो मैप नहीं है पोषण ट्रैकर पे, तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं होता है उनका। तो कई बार सेंटर लेवल पर जो है हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको आइडेंटिफाई करना, मैप करना कि एक्चुअल में चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारे थोड़ा बहुत चैलेंजेस हैं। देखते हैं आगे कैसे हम लोग मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करके, क्योंकि ये एडिशनल सेक्रेटरी सर भी कहे हैं कि मिनिस्ट्री के साथ आप मीटिंग ज़रूर करिए कि नई आंगनवाड़ी बन रही है, प्रपोजल आते हैं, हम अप्रूव भी करते हैं और भी हम बनाएंगे आगे। आंध्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं बताना चाहूँगा आपको। ट्राइबल नॉन ट्राइबल एरियाज़ में जो है उनका जो फूड आइटम्स हैं और वो जो बालामृतम देते हैं, वो बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना। एग्स दे रहे हैं, मिल्क दे रहे हैं। दे आर वेरी प्रोएक्टिव स्टेट, वन ऑफ द वेरी प्रोएक्टिव स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ, इफ आई टॉक अबाउट ICDS डिपार्टमेंट। तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल के लिए उनका अलग जो है फूड आइटम का लिस्ट है। तो ये एक बहुत क्रॉस सेक्टोरल, जैसे मतलब क्रॉस इंटर डिपार्टमेंटल, या आप लर्निंग कर सकते हैं कि अलग अलग जो है कैसे कैसे डिपार्टमेंट आपस में जो है मतलब काम कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। Goals of bringing everyone together so Yes, that they yes, also do yes. this.